मानुषी के मित्रों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ मानुषी संवाद। आज हम बात करने जा रहे हैं केरल पे, जो कि काफी उतार चढ़ाव से गुजर रहा है और इस प्रांत की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी से कन्वर्जन का काम चल रहा है। दोनों तरफ के कन्वर्जन्स, इस्लाम भी और क्रिश्चियनिटी भी, अब एक तरफा बात नहीं रही। हाल ही में लावण्या केस पे आपने देखा कैसे देश भर में बहुत ही इस बात पर रोष प्रकट हुआ कि एक स्कूल की बच्ची जिसको इतना मजबूर किया कन्वर्जन के लिए उसके मिशनरी स्कूल ने कि उसने अपनी जान ले ली। शी प्रेफर्ड टू डाई देन टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। तो इस इशू पर बात करने के लिए कि क्या ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस था, अपवाद था, कि ये काफी बड़े पैमाने पर इस तरह के प्रेशर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ केरल से ही एक बहुत विशिष्ट मेहमान है। प्लीज एडमिन जी, ब्रिंग मोहनदास जी। यस, वेलकम मोहनदास जी। नमस्ते। नमस्ते। वेलकम टू मानुषी संवाद। और कुछ दिन पहले जब मैंने आपसे फोन पे बात की थी मोहनदास जी, इसी इशू पर बात करने के लिए, कन्वर्जन्स और क्रिश्चियनिटी को लेके मैंने तो उस वक्त बात की थी क्योंकि बच्ची का सुसाइड का मसला आया था। तो आपने और बहुत से मुद्दे उसके साथ जोड़ दिए। तो पहले हमें बताइए, हाउ डू यू व्यू दिस सुसाइड? इज इट एन एक्सेप्शनल केस or these kind of pressures are very normal in Kerala by Christian missionaries? और जैसा हम देखते हैं बाकी देश के हिस्सों में, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत का रिश्ता बना लिया है। दोनों इकट्ठे मिलके हिंदू धर्म को और हिंदू सभ्यता को, हिंदू सिविलाइजेशन को अटैक करने में लगे हैं और हिंदुओं को कन्वर्ट करना है, और उसके लिए दोनों हर जगह इकट्ठे हुए पड़े हैं। देयर अटैक्स आर ऑलवेज वेल कोऑर्डिनेटेड। तो क्या केरला में भी ऐसा ही है कि दोनों की अच्छी दोस्ती साठगांठ है, और आर दे बिहेविंग एनी डिफरेंटली देयर? Is Christianity feeling threatened by Islam, which is a relative newcomer in the conversion game? जी मोहनदास जी। देखिए, ये दोस्ती जो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की, ये केरल में भी था और कुछ हद तक अभी भी है, लेकिन उसमें कुछ फूट पड़ी है लव जिहाद की वजह से। अब लव जिहाद नहीं है ऐसा बोल रहे हैं लोग। कोई कहता कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, कोई कहता कि पार्लियामेंट में जवाब दिया गवर्नमेंट ने। आज मुझे पता चला कि होम मिनिस्टर श्री अमित शाह, उन्होंने भी बोला कि लव जिहाद नहीं है। ये सब ऑफिशियल रिप्लाईज है। आपको कहीं ऐसा ऑफिस नहीं दिखेगा जहां लव जिहाद हेडक्वार्टर्स ऐसा बोर्ड लिखा है, या उसका प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है, कुछ है। इट्स ए फिनोमेना जस्ट लाइक माफिया। अब आप महाराष्ट्र असेंबली में पूछिए मुंबई में माफिया है क्या, होम मिनिस्टर विल से नो, क्योंकि माफिया नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन मुंबई में माफिया है, दिल्ली में माफिया है, केरल में माफिया है। तो ऐसा लव जिहाद है। जब लव जिहाद पहले उसका जो विक्टिम्स जो होते थे हिंदू लड़कियां होती थी, तो हिंदू रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन क्रिश्चियनिटी को लगा कि भाई
this is a problem between Hindus and Muslims. Why should we interfere in that? बाद में जाके क्या हुआ कि लव जिहाद में ज्यादा क्रिश्चियन लड़कियां जाने, जो सीरिया में गई ISIS ऑपरेटर, उसमें ज्यादा क्रिश्चियन लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां कम हैं. So panic spread within Christianity also. So Christianity and Islam, as you know, both are proselytizing religions. वो मतांतरण करते हैं हिस्टोरिकली. उनका थियरी ऐसा है कि सबको अपने रिलीजियन में कन्वर्ट करो. इस्लाम बोलता है आइदर कन्वर्ट और किल. ये तो सब है. इसके बावजूद क्रिश्चियनिटी में क्या हो गया, चलते चलते दे रीच सम सॉर्ट ऑफ सैचुरेशन. मेजर चर्चेस जो है, रोमन कैथोलिक, लैटिन कैथोलिक, जैकबाइट, ऑर्थोडॉक्स, ऐसे जो मेजर चर्चेस है, दे ऑलमोस्ट स्टॉप कन्वर्शन. इवेंजलिकल चर्चेस है, पेंटेकोस्टल चर्चेस, दे वर कंटिन्यूइंग बट नॉट विथ मच सक्सेस. ये जो सोशल मीडिया आ गया ना, तो सभी लोग इसका फोटो, जो कहा है, क्या क्या कर रहे हैं, ये सब लीक हो रहा है, तो उसके ऊपर हल्ला होता है. सो दे आर ऑल्सो नॉट मच सक्सेसफुल. अब क्या होता है, ये जो पेंटेकोस्टल चर्च है और रोमन कैथोलिक्स लोग, उनको बुला के अपने चर्च में लेके आते हैं. इट्स ए कन्वर्शन बिटवीन टू क्रिश्चियन फैक्शंस. ऐसा हो गया. तो वैसे भी फूट पड़ी थी क्रिश्चियनिटी में. इट वॉज नॉट ए मोनोलिथ एज इट यूज्ड टू बी वंस अपॉन ए टाइम. टुकड़े टुकड़े बनने लगे एंड इस्लाम स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट. इसमें और एक फैक्टर आ गया. क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन, हाउ टू कन्फ्रंट इस्लाम. क्रिश्चियंस आर रनिंग मैक्सिमम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन केरला, आपको पता है. तो इस्लाम का थ्रेट ये है कि आपके इंस्टीट्यूशन से मुस्लिम स्टूडेंट्स को हम विड्रॉ करेंगे. यू नो हाउ इट टुक प्लेस. in 2011, one college professor, TJ Joseph, his hand was chopped. Yes. ये बोल के कि he insulted Muhammad. And after chopping off his hand, he was terminated from the services also. College was Christian college. So I spoke to the clergy. I said, what are you doing? Already that man is incapacitated, unconscious, lying in hospital, and you are terminating. तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो कुछ गलत हो गया था, अभी ठीक करेंगे वगैरह. लेकिन नहीं किया, कुछ नहीं किया. He continued to be in suspension for years together. तो मैंने ढूंढा इसके पीछे क्या है. इसके पीछे ब्लैकमेल था इस्लाम का. इस्लाम ने क्रिश्चियन लीडर्स को बोला कि अगर इसको आप नहीं टर्मिनेट करते सर्विस से, तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम उस कॉलेज से विड्रॉ करेंगे, बाकी कॉलेजों से विड्रॉ करेंगे, स्कूलों से विड्रॉ करेंगे. 1-2 साल में आपका दुकान बंद हो जाएगा. Because 30 to 35% Muslim students are there in Christian schools. अब 35% स्टूडेंट्स बाहर चले गए तो स्कूल या कॉलेज ऑलमोस्ट बंद करना पड़ेगा. प्रोफेसरशिप, लेक्चररशिप, टीचरशिप, ये सब नौकरी चली जाएगी. दुनिया भर का प्रॉब्लम्स खड़े होंगे. So Christian management decided to surrender and they terminated this professor. This was the blackmailing technique used by militant Islam. But I've never seen Christians yield in this Dibbi fashion. I thought only Hindus do this. Only Hindu leaders do this. That वो घुटने टेक देते हैं इस्लाम के आगे. क्रिश्चियंस तो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड फोर्स हैं, और अगर अपने कॉलेजेस में नहीं लेके जाएंगे, मुस्लिम्स के पास इतनी संस्थाएं अभी कहाँ है अच्छी एजुकेशन के लिए. मदरसे तो बहुत है, पर इतने तो कॉलेजेस हैं नहीं कि दे कैन अफोर्ड टू विड्रॉ. नहीं, see, they can accommodate their students or they will even start new colleges.
Overnight, only one thing will happen, one college will be affected. But slowly, within a period of 1 or 2 years, Islam will withdraw all their students because they have a command over their society. Christians doesn't have that command. More than Christians that, don't have that command. no. They have lost the command. How पहले did it था happen? उनको in 1950s, 60s, up to 70s they had this command, absolute command over their people. अभी तो नहीं है. They had a political party, Kerala Congress, उसके 4 या 5 टुकड़े हो गए, झगड़ा हो गया. जैकोबाइट एंड ऑर्थोडॉक्स, उनका बहुत बड़ा झगड़ा अभी भी चल रहा है. मार्तो में इट्स आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीथिंग. They are keeping aloof. They will not interfere with anything. ऐसा टुकड़े टुकड़े हो गए क्रिश्चियनिटी के केरला. So they don't have political, social cult which they used to have. They don't have that hold now. Their only hold is economical power. उसमें भी क्या हो गया कि many of the clergy, they had secret deposits in Islamic banks in Gulf countries, GCC countries, which is known to Muslim leaders. Now, there is nothing wrong if a bishop is depositing 100 crores in some bank in Saudi Arabia. Nothing legally wrong in that. Why? You do it in a nice manner, informing RBI, etc. But thing is, when public come to know that, he will lose his moral stature in the society. A bishop can legally make money and deposit it, nothing wrong, nothing illegal about that. But there is something immoral and unchristianic about that. This problem is there with few bishops, and they are also having a good command over these ordinary people. They have their own groups. झगड़ा है बिशप और ये बिशप और वो बिशप के बारे में, दुनिया भर के केसेस चल रहे हैं. उसके ऊपर जो नोटबंदी लगी है, तब इनका करोड़ों रुपए चले गए. उसके ऊपर क्यों चले गए, उसके ऊपर केस चल रहा है, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं आपस में. दिस इज द सिचुएशन इन क्रिश्चियनिटी. इस्लाम में भी ये झगड़ा है. मुजाहिद, ये सुन्नी, शिया, सब दुनिया भर के टुकड़े हैं उसमें. But when a problem comes, they are all united. They are also fighting each other. Not so. They have their own share of court cases, their own share of criminal cases. मारामारी सब होता है. But by and large, they keep their monolithic structure intact. That is their success. तो उसमें ये आ गया, लव जिहाद आ गया. उसके बाद ये जो MDMA ड्रग्स है, ड्रग्स जिहाद शुरू हो गया. नहीं, एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड. सबसे पहले लव जिहाद की बात किसी हिंदू के मुंह से हमने नहीं सुनी थी. एक केरला के बिशप ने केस किया था कोर्ट में लव जिहाद को. Your voice is not reaching me. My voice is not reaching? No? आता है बिल्कुल फीबल हो गया. Just give me a second. Why it is so? Can you increase that? Hello, I have increased. Is it better? Is it better now? Yes. Hello. Okay. Can I now? May I ask? आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि लव जिहाद की बात कभी किसी हिंदू ने पहले नहीं की. जो हमें मालूम चला कि एक बिशप ने केस के. यू कांट हियर मी? ओह, वेरी फीबल. एडमिन जी प्लीज हेल्प. ये क्या हो रहा है? यू वांट मी टू कम बैक अगेन? जॉइन अफ्रेश? आशीष, कैन यू हियर? एक बार फिर से ज्वाइन कर दीजिए मैम. I'll join again. Just tell him I'm joining again. Fresh. सर ईयरफोन लगाइए सर.
I removed my earphone. Let us see how it happens. अब आवाज जा रही है सर? आवाज जा रही है? बहुत बहुत कम आ रही है. आ रही है. आप अपने फोन का एक बार स्पीकर चेक करिए, आवाज तो कम नहीं है, वॉल्यूम बढ़ाइए अपने फोन का. आप अपना फोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. मैं तो अब मेरा वॉल्यूम तो मैक्सिमम है शुरू से. अभी आ रही है क्या? अभी पहले से भी अच्छा है. मुझे लगता है कि मेरा ये हेडसेट ने कुछ गड़बड़ किया है. हेडसेट निकाल दिया मैंने अभी. ओके, ठीक है. आई थिंक सो टू. हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि कभी मैंने या हमारे मीडिया में भी कभी हिंदुओं के मुंह से केरला में लव जिहाद की बात मैंने नहीं सुनी थी. ये तो एक बिशप ने शुरू में केस डाला लव जिहाद का हवाला देते हुए, क्रिश्चियन गर्ल्स का हवाला देते हुए. एम आई राइट दैट दे वर द फर्स्ट वंस टू रेज देयर वॉइस? देखिए, लव जिहाद का इश्यू ये जो बिशप ने रेज किया, उसके पहले भी उन्होंने रेज किया था. ये बिशप ने नहीं. They have a synod, some sort of committee, an apex body of all bishops. They passed a resolution 3 or 4 years back, issuing a warning against love jihad. Many of their clergy started speaking inside the church or even outside the church. They started speaking against love jihad. Now, what happened with the recent thing was, this bishop is a very huge, respectable personality. So when he said that, and he added this drug jihad is also going on, not only love jihad. They use drugs to attract girls, and once you fall into that drug trap, it is very difficult to, rather impossible to come out of that. तो ये लड़की इनके पीछे भागेगी. लड़की को भगा के लेने की जरूरी नहीं है. लड़की ड्रग्स के लिए इनके पीछे भाग के आएगी. दिस इज द डिजाइन. वो डिजाइन इन्होंने खोल दिया. बोला कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं. तो बहुत बड़ा हल्ला हो गया. There is an FIR on that bishop pending. There was a demonstration towards his house, which they call palace, bishop's palace. So Muslims took a big morcha towards his palace. Police interfered, somebody supported them, but practically all politicians were blaming the bishop. Nobody was there to support him. Why? In fact, why? Because I'll tell you the reason. Now, Madhuji, you see the behavior of Islam anywhere. Once they cross the 35% mark of their population, then they will assert like anything. They will use violence. Everybody will start surrendering. Every politician in Kerala knows that now without Muslim votes, you cannot be ruling the state, nor not even you can sit in the opposition. That is what is happening with BTech. Islam has crossed 35% mark now in population. आप देखिए तो 2011 में जो सेंसस हुआ था, उसके बाद में अब सेंसस नहीं हुआ है. 2011 their population was 27.8, 28% mark. अभी तो 10 साल से भी ज्यादा हुआ है. तो naturally they have crossed 35%. एक बार 35% क्रॉस कर दिया, you take every country, not only India, every country in the world, the moment Islam crosses 35%, it changes its character and cover. They use their population for democratic change, and they use their demographic muscles to threaten and submit everybody in the society. इसलिए अब no politician will dare call Islam's bluff, including BJP. I'm telling you, BJP doesn't have the guts to stand up to Islam in Kerala because vote मिलना चाहिए भाई. BJP doesn't have the guts to stand up to anybody.
unfortunately. Pardon? I said BJP doesn't have the guts to stand up even to Christianity. They never stood up to anybody. So, talking of BJP standing up, वो तो DNA Anyway, to BJP is not our, at least, subject of this talk. I no, was it's telling not. that. But no, the point I want to make is question I want to ask is I can understand the attraction for Christianity because they offer you good school and they वो अस्पताल है ये फॉरेन ले जाएंगे विदेशों से लिंक हो जाएगा आप अंग्रेज बन जाएंगे साहब बन जाएंगे इस्लाम की क्या अट्रैक्शन है ये तो इतना बर्बर दिखने में भी है not that Christianity is any better once they come into power, but they have no redeeming features. What is it about Islam that people are Hindus of Kerala are gravitating towards them? Madhuji, see, it is convincing power of individuals. बात करने की कुछ तरीका है. So you can make people toe your line if you are clever enough in speaking. Any nonsense can be driven to the heads of a young generation if you are clever enough. It is not that they read all the book and they get convinced, oh, Islam is so attractive, let me join Islam. ऐसा नहीं है. You develop such a close and thick friendship so that one girl will trust you like anything. आप जो भी बोलेंगे वो करेंगे. इस हालत में लाते हैं with continuous learning and unlearning. अभी तक जो सीखा है उसको सब हटाएंगे और नई चीज कुछ सिखाएंगे. They will show all good faces of Islam, and that is how conversion takes place. Conversion is never a voluntary process. It is always a forcible conversion. Sometimes people use the physical force. Otherwise, you can use mental force. How psychologists are controlling mad people. You can control people with your ability to speak, ability to articulate. All these things affects people. तो उसमें से 5-10 जन आपको मिल गए तो बहुत हो गया. Per year you need say 1,000 or 1,500 maybe your target. ठीक है, मिल गया. और एक लड़की चली गई तो उसके दोस्त जो है वो भी सोचेंगे कि हम भी क्यों ना जाएं. ये सब है. So they give attractive offers. They use handsome boys for that. They use most modern motorcycles. Yes, सब मिला के convert होता है. ऐसा नहीं कि you give them a Quran and ask them to study, तो फेंक देंगे वो किताब. कोई भी फेंक देगा. So that is not the way of converting to Islam. They never teach Quran or anything. They teach something else. They just attract the young girls. And then एक बार आपके हाथ में आ गई, then see, once the chastity is lost, an Indian woman loses her confidence also. अब गया, मेरी जिंदगी चली गई. This is the normal thought of a girl once she is used by a man. तो फिर तो क्या है, इसके पीछे चलें. Hold on a minute, please. I think ये जो आप कह रहे हो ना, once chastity is lost, वो generation लड़कियों की extinct हो गई है, जो सोचती थी कि हमने किसी के साथ सेक्स कर लिया तो अब हमारी जिंदगी चली गई. ऐसा ही अब रहा नहीं है. Now girls are entering into sexual relations with gay abandon. Now the point I'm trying to make is this: two things. One, we know that in England, for example, लड़कियों को फंसाने का जो grooming gangs, एक तो number 1 drugs का इस्तेमाल, और वो hypnotic drugs भी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल sense of self confidence खत्म हो जाता है. You become easy to. Second is that these guys are grooming gangs वाले जो होते हैं, इनकी sexual training, they are good stud bulls.
And most, for example, non-Muslim boys are clumsy about sex, especially in their teenage, especially when they are, not yet married. They're very clumsy. Whereas Muslim boys are trained well into sexual performance to act like stud bulls. तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है ये कई जगह काम किए. क्या केरला में भी यही दो और एंड ऑफ कोर्स द मनी दे विल बट बुरके में डालते हैं, हिजाब में डालते हैं. लाइफ क्या है उसके बाद, हिजाब और बुरके के बाद आपकी क्या जिंदगी है? नहीं, वो ऐसे सोचते नहीं है मधु जी. क्या है, if someone is a strong personality, you cannot convince or attract him or her to another religion. But there are vulnerable people who doesn't have that much mental stamina or strength to say no. At some point of time, they must understand that this man is up to some mischief, and they must say no. ये जो assertion है मन का, ये assertion बहुत लोगों को नहीं है. Very weak-minded girls are there and boys are also there. Weak-minded people are there in the society. So इसीलिए what they do is they try with somebody, and if it is not clicking तो उसको छोड़ देते हैं. They will not force. They will try the next लड़की. This is how they do. It is not that they are converting 100%. 100 में से 10 या 15 मिल गया तो बहुत हो गया. This is how they operate. They know how to identify the weak-minded girls. Once they know that she is weak-minded, vulnerable, mentally not that strong, then they start manipulating her mind so that she becomes a slave. बाद में कोई सोचती ही नहीं है, जहां बुलाते वहां जाती है. और एक बार गया तो अभी जो अर्बन जो चेंजेस जो आ रहे हैं सेक्स के बारे में वगैरह, वो विलेज में नहीं है. Village is still being run by the old equations about sex. So once you are gone, तो गई. फिर तो घर में भी she becomes untouchable in the society. The stigma will not go lifelong, which she understands. So वो सोचती है कि अब हो गया, अब मैं कहाँ जाऊं, तो इसी के साथ जाएंगे, जो होता है होने दो. ऐसा they are resigned to their fate. ऐसा हो जाता है. It's a very complex situation in which a girl of the age of 17 or 18 lands herself. Nobody is there to console her. No one will support her. If she भाग के वापस आ जाती है, you might have heard of a few girls in Kerala. They are running Arsha Vidya Samajam. They were victims of love jihad. Now they are running an institution for people who are trapped in love jihad. वो लाते हैं, they do some counseling. दुनिया भर का काम करते हैं 2-4 लड़कियां, and some young boys are also there to help them. उसको AVS बोलते हैं, आर्ष विद्या समाज. They have written books in Malayalam. Their experiences they have written. I know them. I have spoken to them. Good ladies. Now they are grown up. I would like to be put in touch with them, so please do that. But I'll send you their number. You can speak to them. My related question to you is this. Yeah. Conversion में कौन ज्यादा कर रहा है? लड़कियां ज्यादा लव जिहाद वाली, जो आप कह रहे हो 35% इनका डेमोग्राफी हो गया है, तो क्या केवल सिर्फ लव जिहाद विक्टिम से इतनी हुई है कि पूरी फैमिलीज कन्वर्ट कर रही हैं, या लड़के भी जा रहे हैं या पुरुष भी जा रहे हैं? लड़के भी कन्वर्ट हो रहे हैं, पूरी फैमिली कन्वर्ट हो रही है. मनी इज बीइंग गिवन फॉर कन्वर्शन. ये सब हो रहा है, एक्सेप्ट आई मीन ओपन वायलेंस जो है वो नहीं है. बाकी सब चीज जो है, पर्सुएशन, मनी, जॉब ऑफर, लैंड, आपको क्या चाहिए वो देने को तैयार है. ओनली थिंग यू हैव टू बी समबडी इन द सोसाइटी. अब मेरे जैसा एक आदमी कन्वर्ट करने के लिए तैयार है,
तो करोड़ों मिल जाएंगे शायद, because I'm at least known person in my district, so that will have a telling effect on others also. But for an ordinary man, it could be 1 or 2 lakhs or maybe 5 lakhs max. So they see his social influence. अरे ये चेंज हो गया, तो बहुत सारे लोग सोचते थे then I will also change. So they operate very cleverly, but there is no open violence. Convert or kill वगैरह जो कुरान में लिखा है, that is not yet practiced. They practiced it in 1921, जिसको मोपला rebellion बोलते हैं. 1921 they did. Tipu Sultan did that in Kerala. That is how northern Kerala is highly populated with Islam. That was done by Tipu Sultan. उसके बाद में 1921 there was a major right, Hindus को भागना पड़ा वहां से. That's all part of history. But after that, open violence is not there. But all other type of mental violence, pursuing money, sex, job, everything, and even position, political position. All these things are being offered for high class people who can influence others also, who can make an impact in the society. The famous writer Kamala Das, she is no more now. I want to ask you about her. Yeah, she converted at the age of, I think she was 72 or so at that time. She was a good friend of mine, and therefore her conversion took everybody by surprise. How did it happen? And I'm told that she wanted to come back, but there was no coming back. She was very unhappy after having left her home and faith. क्या हुआ वो कहानी? उस कहानी का किसी ने रिकॉर्ड रखा है? See, Kamala Das was not consistent in his in her personal life. She was a good poet, writer. But if you go through her personal life, she was never consistent on anything. That happened with religion also. She was not an ardent follower of Hindutva or anything. Mohandas ji, let's stick to for a minute. I mean, anybody who knows Kamala Das, सबसे पहली बात तो big rebel. She did not conform. आप कह रहे हो कंसिस्टेंट है, पर मैं कहूंगी कि किसी भी चीज में उन्होंने कंफर्म नहीं किया सोशल नॉर्म्स में, और कुछ ना कुछ बवाल बनाते रहती थी. अब ऐसी महिला जो अपने केरला की हिंदू सोसाइटी में भी काफी बवाल मचाने वाली मानी जाती है, अपनी राइटिंग के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, लाइफस्टाइल के माध्यम से, वो इस्लाम की तरफ कैसे जा सकती है? क्योंकि वहां तो दबा के रखा जाता है. वहां तो स्त्री को ऐसी कोई आजादी नहीं है कि वो कुछ भी कर ले, कुछ भी शोर मचा दे, कुछ भी लिख दे, कुछ भी बोल ले. हाउ कम शी लैंडेड इन द लैप ऑफ इस्लाम और बुर्का हिजाब पहन के? कैसे हुआ? That's what I told you. Throughout her life, she did not have a firm, consistent stand on any values whatsoever. We know so many poets, film stars, etc. They live, according to our norms, they live dangerously. But they know how to live dangerously. But unfortunately, Kamala Das was unaware of how to live dangerously. She was living dangerously, but she never knew that she was living dangerously. That was her problem. So she thought by converting to Islam, क्या होने वाला? बहुत बड़ा बवाल मचेगा, इतना ही है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. She never knew that the trap to which she is going to walk.
at 72, age 72, how did they trap her? Was she lonely? Is that how? What did they do? Oh, see, age is not a factor in this type of thinking. She was in her personal life. She was, I told you, living dangerously or living colorfully or not caring for any ordinary values which we think is required in the life. She ridiculed everything in her personal life. Nothing wrong in that. Generally throughout the world, जो लोग प्रतिभाशाली बोलते हैं, उनको ये सब करते हैं कुछ. They marry several times, they divorce several times. All these things happen in their life. And Kamala Das, for some reason, she also, it says that she fell into love with somebody, and for him she got converted. Now somebody can exclaim, "Bhai, ye kya hai? At the age of 72, you are loving somebody." होता है, अब क्या करेंगे? These are all exceptions, not पर rules. क्या वो वापस आना चाहती थी? मैंने सुना है कि वो बहुत दुखी थी, वापस आना बहुत चाहती दुखी थी, बहुत पर दुखी थी. किसी ने उसको डर के मारे वापस नहीं आई. वापस आना चाहती थी. She told her friend Leela Menon. In fact, Leela is also no more now. Leela wrote it that Kamala spoke to me over phone and said, "Leela, I am in a trap, but I am unable to come out because they always keep a surveillance over me, and I have fear that I will be killed. I don't know what to do. I'm in a jail, etc., etc." That's on record. She has written that. Nobody offered her help. Nobody extended a hand of mother to her. No, that was the unfortunate part of that. Why? Because she would have a lot of stories to tell. अगर उनको वापस लाते और वो अपना सारा अनुभव बयान करती तो बहुतों को सबक मिलता, सीख मिलती कि वहां तो नरक है. But you know, Leela made this conversation public only after the death of Kamala, not before that. Why? It's are between Hindus them. so weak? The problem is कि हिंदू कभी भी टाइम पे उठ के खड़े नहीं होते हैं किसी के लिए भी, अपने लिए भी. ना उसके बच्चों ने मदद की जो कि वेल पोजिशन थे समाज में. They're all very well placed. They could easily have helped her. Friends भी, लीला भी मरने के बाद बोलती है ये क्या तमाशा है, किसी और को सूझा नहीं, और जिद्दे से कि ठीक है मरने गई थी, मरो. Is that the kind of response Kerala society had? All these questions will remain unanswered. We don't know. Now, Kamala was a very strong person in a way. किसी ने मदद क्यों नहीं किया? ये तो केरला के समाज को, अगर मुझे पता चले मेरी कोई दोस्त है इस तरह फंसी हुई है, I will move heaven and earth. या किसी और को बता दो, और कुछ नहीं पुलिस को बोलो कि प्लीज उसको रेस्क्यू करो. कुछ तो किया जा सकता था. ये कैसा हिंदू समाज है? इतना दब्बू कैसे बन गया? कमला के केस में तो बहुत नहीं, कि अगर वो वापस हिंदू समाज जो है डरपोक अब नहीं बना है, वो डरपोक ही था हिस्टोरिकली. We have some royal exceptions, but as a rule, Hindus were very, fearsome people. डरते थे बहुत, अभी भी डरते हैं, भागते. फाइटिंग स्पिरिट जो है हिंदूस में बहुत कम है. You will see so many warriors, Hindu warriors in the society, but not to the proportion in which it should have been.
तो इसलिए हम गुलाम बन के रह गए इस्लाम के कितने 800 साल। खैर इस्लाम के गुलाम तो क्रिश्चियन भी बन गए, इस्लाम के गुलाम तो अमेरिकन भी बन गए। अभी उनका बाइडेन भी तो इस्लाम का गुलाम बना हुआ है, यूरोप बन गया, इंग्लैंड बन गया। कहाँ बचे हैं, कहाँ बचे हैं, कौन बच रहा है उनसे? तो वो तो है। सो हमने तो फिर if लड़ाई even की, हमने तो फिर if लड़ाई if, की। if even Europeans are succumbing to Islam, then हिंदूज का क्या बोलना। नहीं नहीं, ऐसे हिंदूज तो मत पहले करो। से हिस्टोरिकली डरे हुए हैं। देखिए मैं नहीं मानती, मुझे लगता है कि हिंदू जहां जहां उनको स्पेस मिल रही है रेजिस्ट करने की, किया। हमने 1000 साल तक इनको इनके साथ लड़ाई की है, तभी बचे रहे। ईरान, इजिप्ट, टर्की कितनी जल्दी कन्वर्ट हुए, 15 20 30 साल में पूरा 100% कन्वर्जन हुआ। हमारा आज भी लोग मरने को तैयार हैं। जो लावण्या का केस हुआ, शी प्रेफर्ड डेथ टू कन्वर्जन। ऐसे कितने लोग हिंदुओं में निकले हैं जो क्रिश्चियंस में नहीं निकलने वाले। तो ये मत कहिए प्लीज हमें। लेट्स नॉट इंडल्ज इन सेल्फ फ्लैजेलेशन ऑफ दिस काइंड। नाउ कमिंग टू बैक टू दिस क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का टकराव, ये क्या क्या इसके मैनिफेस्टेशन है? आप कह रहे हो कि केरला में दे आर एट वॉर विद ईच अदर, और दे आर एटलीस्ट नॉट romancing each other, they are not hand holding. What are the manifestations which tell you कि ये बाकी हिंदुस्तान में जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम हिंदुओं को अटैक करने में बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं, वो केरला में नहीं है? इसके कोई उदाहरण दीजिए ना। देखिए the recent controversy over that bishop speech that created a serious friction between Muslims and Christians. Christians started aligning with the Hindu forces directly and indirectly. A large section of Christians that may not reflect in politics. But the unfortunate part is that the proof always people need from the area of politics, which may not politically that may not reflect. But the consolidation of Hindus and Christians are slowly taking place, which Islam also understands. They understand the danger of that. Therefore, there is no major violence in Kerala. Number two, Kerala is the headquarters of Islamic terrorism. Therefore, they will not disturb their own headquarters. Headquarters को अगर disturb किया तो all central agencies, CRPF, BSF, Army वगैरह आ जाएगी, मुश्किल हो जाएगा. So they want to keep Kerala peaceful. Therefore, you don't see any bomb explosions in Kerala. Because Kerala is the headquarters of Islamic terrorism in India. They lost the Kashmir grip. वहाँ कुछ नहीं हो रहा है अभी. So Kerala has become stronger ground for Islamic terrorism. This is of course worrying the Christian population also. So they are slowly thinking of aligning with Hindus. And at the ground level, there is good relation now. That is why I told you practically there is no conversion at all to Christianity. Maybe one or two isolated incidents will be there. What happens Christians, with what they do is they just no, tell me. You say, see, the Lavanya case shows the extent of pressure even Christians are using till date. आप बताइए, लड़की ने सुसाइड कर ली, आप कह रहे हो वो परवाह नहीं कर रहे आप कन्वर्जन्स की, तो फिर उसको देखिए, I'll tell you why. The situation is different in Tamil Nadu. Tamil Nadu Christianity is much more aggressive. I mean, recently in Kanyakumari district, somebody made a speech and police has taken a case against him. He went to High Court and हार गया. बहुत बुरी तरह he insulted the country like anything. And I think sedition charges are put on him.
So Tamil Nadu is a different story. Kerala is a different story. Okay. And the equations which are working in Tamil Nadu are no more working in Kerala. The style of functioning of Islam and Christianity in Tamil Nadu is entirely different from Kerala or even Karnataka. It's not a uniform strategy or uniform tools which they use for conversion. In Kerala, what they do is they make you more friendly towards Christianity. That they do through their schools, their hospitals, etc. The way they treat you, the way they teach you, the way they put their furniture, a small cross here or a Jesus Christ photo there. This type of small pressures are being given so that you are not anti-Christian. You should not become anti-Christian. You may not convert yourself, but you will not harbor any ill will against Christianity in you. This type of operation is still going on. But actual conversion, the number of conversion, if you take the statistics, it has gone down. Okay. And Christianity is in much more danger because now out of every 100 children who take birth, 43 or 44 are Muslims. Now, in 2019, only 19 figures are available with me, 20 and 21 is not available. So 2019, out of 100 children, 44 were Muslims, 41 were Hindus, and only 12.6 were Christians. So Christians, their population growth is negative. They are healthy people, young people. They have gone to Germany, America, other European countries. Only old Christian couples are there in Kerala. Majority of Christians. They are very rich, having high bank balance, but their children are all in European countries and America. And their population growth is also negative. Many of them have become Australian citizens, American citizens. They take citizenship also so that they are no more Indians. These are all things which has happened to Christianity in Kerala. Tamil Nadu, it is different. Tamil Nadu, basically the coastal belt, that means fishermen, they are maximum Christians. The so-called upper caste Hindus are yet to be converted in Tamil Nadu. है बहुत कम है. बाकी ये class that is inherently little bit violent in character. That society is like that, whether they belong to Hindu, Christian or Muslim. Generally, fisherman community is short-tempered and violent. So this type of activities you will see in Tamil Nadu. Fishermen are there in Kerala also, but they have gone through this experience and now they become some sort of thoda ठंडे हो गए हैं, थोड़ा सा. Therefore, you will not see Christian violence or Christian conversion more in numbers. But Islam is doing all other methods and they are increasing their numbers. पर इतने पॉलिटिकल मर्डर्स जो केरला में होते हैं, कितने हिंदुओं के मर्डर हुए और कितनी पॉलिटिकल वायलेंस आरएसएस और सीपीएम के बीच में, कांग्रेस और सीपीएम के बीच में, जो हिंदू मुस्लिम में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो इट्स नॉट रियली एनी मोर वेरी पीसफुल सोसाइटी. See, every CPM RSS clash or murder is not done by either RSS or CPM. I have been raising this issue and I wrote an article also. Once an RSS man is killed, immediately there is a presumption that the killer is CPM, which is not. Now at least 7 cases have come out. RSS CPM clash and killing
was not by either RSS or CPM. It was done by Popular Front, that is Islamic fundamentalists. They kill a Hindu and put the blame on another Hindu. You kill an RSS man and you put a red flag there. फिर भाग जाओ. Everybody will say that, oh, CPM killed RSS man. Now, Kerala police have given a report to Home Ministry that 7 murders have been identified, that neither RSS nor CPM is involved. It was done by Popular Front of India. अच्छा ये बताओ So, कि जी yes. please finish, then I'll ask. Yeah. So this is how Islam is playing their game in Kerala, which Christianity will not do. They have not done, at least to this date. Therefore, what I would say that the imminent danger in Kerala is not Christianity, it is Islam. Christianity is a proselytizing religion, we understand, but their activities बहुत धीमी पड़ गई है. होगा एक हाथ कुछ तो होगा. We can choose some examples and then say that there is tendency, but compared to 40s, 50s, 60s and 70s, the conversion has drastically come down. Christian conversion has drastically come down. Kerala, that is a fact. In North India, the conversion to Christianity is moving at a very frenetic pace. हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में बहुत तेजी मध्य से, प्रदेश में, हाँ मध्य प्रदेश, सब जगह मध्य प्रदेश, उड़ीसा is their target. नहीं, हरियाणा, पंजाब. अभी देखिए चीफ मिनिस्टर बन रहा है उनका, क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर के लिए खड़ा हो गया. अब तो आप सोचिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है. अकालियों के गढ़ में, जाट अकाली के गढ़ में आप एक क्रिश्चियन को बना रहे हैं चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट. ये छन्नी साहब क्रिश्चियन है क्या? क्रिश्चियन है, चरणजीत सिंह छन्नी क्रिश्चियन है, बड़ा अग्रेसिव क्रिश्चियन है. अच्छा. हाँ, प्रोसेलिटाइजेशन में बहुत एक्टिव है, और यही कारण है सोनिया ने उसके ऊपर ताज पहनाया है. यही कारण है सोनिया जी को क्यों इतना पसंद आया है वो. अब मुझे फाइनल क्वेश्चन टू यू इज दिस. यस, हिंदू रेजिस्टेंस क्या फॉर्म्स ले रही है केरला में? Pardon me? What form is Hindu resistance taking to Islamic conversions? This is my final question. At the ground level, RSS is, or last month they organized several meetings to make public aware, and they do house-to-house contact. These are all the things which they can do, and that is what they are doing. So RSS ground level पे resist कर रही है conversion? देखिए, what RSS practically does is to make Hindu stronger, not that go and confront the missionary or Islamic people, उनको रास्ते में पकड़ो, बात करो, झगड़ा करो. This is not their style. They keep Hindus informed that you are in danger, please be strong, ऐसा सब हो रहा है. Continuously they preach and they make they try to make Hindus much stronger society by increasing the bond between Hindus above caste and other considerations. This is how RSS is working. Is it succeeding? Their bonding? No, success is something which is difficult to measure. How will you measure the success? Last year, say 1,000 people converted to Islam. This year only 900 is converted. Can you say that it is a success of RSS? It could be accidental also. So it's very difficult to measure the success. But the only force which is working against this Islam is RSS. No, what I mean by success is बहुत सारे जगह में हम देख रहे हैं जहां जैसे
नॉर्थ में ये उदाहरण तो बहुत ज्यादा है कि कन्वर्जन माफिया कहीं पहुंचता है गांव में, लोग भगा रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। जहां मजार बनाने की कोशिश की, मजार के बाद फिर मस्जिद, वो तोड़ रहे हैं कि आप लैंड जिहाद नहीं करोगे। तो जम्मू में और कई हिस्सों में ये रेजिस्टेंस तो ग्रो कर रही है इस्लाम के प्रति और क्रिश्चियनिटी के प्रति भी। बहुत जगह लोग निकाल रहे हैं अपने गांव कि हमारे मोहल्ले में नहीं आने देंगे, हमारे गांव में नहीं आने देंगे। तो वो फर्क तो पड़ रहा है। दूसरा जो सवाल है कि पीएफआई के बैन की क्यों नहीं कोई मांग उठा रहा? ये तो बिल्कुल मर्डरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये मोदी सरकार क्या कर रही है? व्हाई दे नॉट बैनिंग? आई वुड से इवन बैन मुस्लिम लीग, व्हाई नॉट? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ग्राउंड लेवल पे केरल में आरएसएस ये काम नहीं करता है। कोई कहाँ जहां पर मस्जिद बनाता है तो उसको रोको, ऐसा कुछ काम नहीं करते। जिसको मस्जिद बनाना है, there is a procedure, they can go through that. For every religious institution you have to take a permission from the panchayat authority or district collector, something like that. Procedures are there, you can do that. RSS is not objecting to that. So but RSS is continuously they contact Hindus and increase their level of confidence so that they become a strong society. This is how RSS is functioning, at least in पीएफआई को at बैन least in Kerala, RSS is functioning in this manner. पीएफआई को बैन क्यों नहीं मांग की जा रही? देखिए, that doesn't mean anything. You ban Popular Front of India, they will reappear next day with the Unpopular Front of India. क्या करेंगे? So banning is not a solution. What is the solution? It's a militarized force. It's not just ordinary Muslim, they are militarized force. पूरी आर्म ट्रेनिंग है उनको, तो क्या करेंगे? देखिए, आर्म्ड ट्रेनिंग वगैरह, you have methods to deal with that even now. After Modi's coming, they made a small change which was significant, which only Islam could understand, nobody else understood. They put a condition in the UAPA Act that a single individual can be declared terrorist. Till that time, you can declare an organization terrorist. Lashkar-e-Taiba, terrorist. A Popular Front of India, terrorist. But you cannot declare an individual as a terrorist. Mohandas terrorist is a law name that has been brought. Now it has given a big shock to the operation of fundamentalist Islam, because without any organization, without anybody's consent or collusion, someone can take a bomb, railway station या airport में जाओ, फोड़ दो उसको, आप भी मर जाओगे, साथ में 100-150 लोग मर जाएंगे. So how to deal with this man? He doesn't belong to any organization. तो ऐसे लोगों को डील करने के लिए they have changed the UAPA Act. Now to deal with the Popular Front and organizations like this, our old tool of banning the organization, ठीक है, ban किया. Next day he will come with another name because he is having that infrastructure with him. People are with him. आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते. कल तक बैन नहीं था इसलिए काम किया, आज बैन है, हमने काम बंद कर दिया, हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया. Now how to handle this situation is a legal problem, and this arms training वगैरह, that is all illegal activity. Police can take action. Police लेता नहीं होगा because in Kerala I have seen the administration is leaning towards Islamic fundamentalists, तो कोई action नहीं होगा. Or if you go to court against them, then you will be abused. I was abused for lodging a complaint against Islamic terrorists. अभी जो बैंगलोर में है मदनी,
उसके एक्टिविटीज के अगेंस्ट में आई मेड ए कंप्लेंट, बट उल्टा हमको गाली दिया, and I have to put a case against the policeman who told me useless things. ये सब है केरल में. The administration is always with the Islamic forces because they have 35% votes now, and So are you nobody saying else have. Kerala is one story? We should write off Kerala. आप ये कह रहे हो? नहीं, I will not say that. Right of नहीं करना है. See, I am telling you 35% of Kerala's population. That is around, say, 1 crore. How many crores in India? 140 crores. 140 में 1 crore का बात कर रहे हैं. So there is nothing right of वगैरह कुछ नहीं है. We have to systematically implement a law and order machinery. If there is lacking, as I told you, this old type of banning, etc., will not work. You have to have more sophisticated, detailed legislation to deal with this type of people. When new challenges come, the legislature has to pick up. What about an all India ban on conversions? All India ban on conversions is okay. That is a welcome thing. That is a welcome thing. So it seems to me. In fact, I wanted to ask this question a few years back to Home Minister Amit Shah, but I was prevented by his assistants. छोड़ो वो सब, don't provoke him. मैं बोला मैं कहाँ provoke कर रहा हूँ. Anyway, finally I said, okay, I'm not asking that question. I asked several other questions. But an all India anti-conversion law is required because conversion is violence. Mahatma Gandhi has said that conversion is violence. Well, through whichever method you convert, that is violence. That is what Mahatma Gandhi has said. Now he is the final word in India. Please, let's not bring him in because he facilitated conversions. He did not resist it. कभी-कभी बीच-बीच में बोल देते थे, पर जब मालाबार का हुआ सारा हादसा, फोर्स्ड कन्वर्जन, ट्रू नहीं निकली महात्मा गांधी के नाम से, तो उनका महात्मा हुड तो अब उतर चुका है. Let's not talk about him. But most importantly, what you're agreeing is that a strong all India legislation against conversion is what is required. Yes, no doubt about it. I am all for it. With it also some effort, जिसको बोलते हैं घर वापसी. अभी जैसे अभी एक आपके फिल्म स्टार साउथ में आए हैं, बहुत हाई प्रोफाइल फिल्म स्टार घर वापसी किए हैं इस्लाम से. तो ऐसे हमको भी वही प्रयास उसी दिशा में शायद करना होगा. घर वापसी शुरू किया था केरल में, बाद में क्या हो गया मुझे पता नहीं, विश्व हिंदू परिषद डर गए या कुछ हो गया, बंद कर दिया. I don't understand what is wrong in घर वापसी. No, it's not wrong. They'll murder you if you try to get them back. मर्डर करेंगे, इनसे जबान से बात तो होती नहीं है. नहीं, हर बात पे ठीक है, मर्डर करेंगे तब ना, जो कुछ नहीं किया. नोबडी ऑब्जेक्टेड टू घर वापसी. मीडिया में कुछ चिल्लामिल्ली हो गई, उसको छोड़ के ग्राउंड लेवल पर देयर वाज नो रेजिस्टेंस. दे वर हैप्पीली डूइंग घर वापसी. आपको तो नहीं मालूम ना क्या प्रेशर डाले होंगे. आपको थोड़े बताएंगे आके कि हम पे ये प्रेशर डाला था. अगर कमला दास जैसी बुलंद महिला, इतना हाई स्टेटस, हाई फैमिली, and you know someone who yelled would have the whole state listening to her whether they liked her or not, वो बेचारी वापस नहीं आ पाई. आप सोचो औरों का क्या हाल करेंगे. ये दहशतगर्दी जो है इस्लाम की, इसके लिए तो स्टेट एक्शन ही चाहिए.
इतना स्ट्रॉन्ग स्टेट एक्शन कि आप किसी को कन्वर्ट करो, आप सीधा हार्ड लेबर अंडमान. Now, of course, that's not much of a jail. It's only a memento now. It's only a historical key. But I think what we need is a very strong law. But I doubt that Modi ji के चलते ये होने वाला है, because he is very soft towards Islam. Or don't you think so? This is my last question to you. You don't think that Modi ji is rather soft on Islam? He is not soft, but I don't think he will bring an all India legislation on this conversions. नहीं, They may अभी do it state wise. अभी भी बहुत सारे states में anti conversion law है, but that is to be modified. That was all made during Jawaharlal Nehru's time and Indira Gandhi's time. They Yes. successfully did that, but that is to be modified to meet the new challenges. But all India legislation, I don't think Modi will do that, merely because he is not convinced about such legislation. That is what I understand. No, he's also very Would- soft towards Islam. He has encouraged. Actually, state policy under Modi has given incentives to convert. जो स्पेशल स्कॉलरशिप्स मुस्लिम्स को दी जा रही हैं, पीएमओ फंड से दी जा रही हैं, इतनी स्कीम्स हैं, 3-5 दर्जन स्कीम्स हैं केवल मुस्लिम्स के लिए. तो इसका मतलब मुसलमान बनो और स्टेट भी आपके लिए दसियों स्कीम्स लेके आपकी मदद नहीं, करेगा. आपको पता है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? This is all started with the Sachar committee report, which was accepted by the then parliament, and it is a study, comprehensive study. कितना study किया मुझे पता नहीं. It is the most bogus report ever written. होने दो, but that was accepted by the parliament and a separate देखिए, अगर Muslims के लिए separate budget बनाया, and under that budget it is going. But as chief So minister now of reversing Gujarat, he that, never Sachar did commission, that. Mohandas ji, Sachar committee report was challenged in various high courts and Supreme Court, but it didn't stand. तो क्या हो गया? That became the law. And तो एक बार हो गया तो फिर डिपार्टमेंट को पैसा देना पड़ता है. Just like madrasa education. आपने एक बार ग्रांट देना शुरू कर दिया तो फिर बंद करना मुश्किल है. आप एक ही बात दोहरा रहे हैं. I will need to wind up now. It's overshot the time. Number 1, as chief minister of Gujarat, मोदी जी ने बिल्कुल भी सच्चर कमेटी रिपोर्ट की तरफ नहीं देखा और कोई स्कीम वहां नहीं लागू होने दी जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए हो. He defied the center. सेंटर ने बहुत प्रेशर डाला, यूपीए ने डाला, उन्होंने नहीं माना. नंबर 1. नंबर 2, हमेशा वो बोलते थे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के खिलाफ. इसकी कोई जरूरत नहीं है. अब तो और भी मजबूत कर दी. और स्पेशल स्कॉलरशिप फंड, पीएम स्पेशल स्कॉलरशिप फंड मुस्लिम्स के लिए जितना है उसकी कोई जरूरत नहीं थी. हजारों करोड़ रुपया, बट वो भी किया. और जो आप कह रहे हैं इट इज लॉ, इट इज नॉट लॉ. Actually, all that he had to do, if he really cared, was to set up another commission to examine the Sachar committee report. उसका डेटा इतना बेईमान है. It is a typical Islamic taqiyya document, deception document. Now the point I'm making is, अगर सरकार उसको रिवर्स करना चाहती थी, एक कमीशन बिठा सकती थी, उसका डेटा एग्जामिन किया जा सकता था और एक अपडेट वर्जन उसके आनी चाहिए. Exactly. और उसमें दिख जाता कि मुस्लिम्स आर एक्चुअली फार अहेड. दे आर डूइंग far better than Hindus of comparable strata, because the community is rich with funds and it offers support. Housing subsidy, ये subsidy, वो subsidy, zakat fund से क्या क्या नहीं वो अपनी कम्युनिटी के लिए कर पाते. तो मुझे लगता है कि उसकी बहुत जरूरत थी.
उसको रिवर्स करने की जरूरत थी। मोदी जी ने उसको अपना बाइबल बना लिया और काफी प्रभावित हैं मोदी जी इस्लाम से। प्रभावित हैं, डीपली प्रभावित हैं। कुछ ऐसा बदलाव आया है मोदी जी के दिमाग में जो समझे कि आने वाली पीढ़ियां, मुझे लग रहा है इसमें समझने के जरूर प्रयास करेंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आई एम श्योर वी आर अग्री आई मीन आई एम ग्लैड वी आर अग्रीड ऑन वन थिंग व्हिच इज all India legislation is needed, very strict law is needed to ban conversions in one go with very strict punishments. इस पे तो हम दोनों अग्रीड हैं। मोदी जी नहीं करेंगे तो मोदी जी के बाद भी तो कोई ना कोई आएगा और इस खतरे की घंटी जो बज रही है उसको हीट करेगा। Would you like to wind up? Concluding comments, sir? Nothing much. See, all India legislation is required against conversion. But my assessment of the situation is that Prime Minister is not convinced about that. वो भी छोड़िए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का, there is a public interest litigation moved by a Muslim lady in Supreme Court based on her fundamental rights of getting equal share in her father's property. Supreme Court sought the reaction of Union of India. Union of India referred the Supreme Court's questions to, the whole writ petition was referred to Law Commission. And Law Commission, after keeping it with them for 3 or 4 months, they gave a reply to Union of India that Uniform Civil Code is not required as of now. This is the recommendation of Law Commission. And Government of India submitted it into the Supreme Court with a covering letter saying that this is what our Law Commission has said, this is our submission. ये पढ़ा है इसमें। अब देखिए कहाँ से यूनिफॉर्म सिविल कोड इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मे बी अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लेकिन है वहां पर। स्टिल द लॉ कमीशन सेज दैट वी नीड नॉट हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड एज ऑफ नाउ। आप कब करने वाले हैं? And uniform civil code has nothing to do with religion. So you know what is uniform civil code? It is a uniform family law. That to me is not a very wise move. I think we should let Muslims practice their barbaric law. I think it's important. इसी से हिंदू उनसे डर के, हिंदू महिलाएं डर के दूर रहेंगी। जैसे ही आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया तो एक मास्क मुखौटा बन जाएगा कि हम भी अब आप जैसे हो गए। इम्प्लीमेंटेशन नहीं कभी होने देंगे और मुस्लिम हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाना और आसान हो जाएगा। तो मैं तो नहीं चाहती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम पे लागू किया जाए। उनकी जो बारबेरिक लॉज हैं, अपने पर्सनल लॉ, जिसकी वजह से ज्यादातर हिंदू महिलाएं डरती हैं उनसे, वो बना रहे डर, वो हमारे हित में है। उनको मत खड़ा कीजिए अपने बराबर, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं करवा पाएंगे उनसे। इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं, ऊपर से नाटक हो जाएगा और सारा देश जला देंगे वो एक तरफ, और कभी इम्प्लीमेंट हो नहीं सकेगा। पुलिस की हिम्मत नहीं है किसी क्रिमिनल को पकड़ने की मुस्लिम मोहल्ले में जाके। आपको लगता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड करवा पाएंगे उनसे? तो इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। और हम मुस्लिम महिलाओं के लिए अपना दिमाग माता पच्ची बंद कर दें। उनको चाहिए होंगे तो 10 तरीके हैं। वो लॉज 498A का इस्तेमाल कर रही हैं, एंटी डाउरी लॉ का इस्तेमाल कर रही हैं। और देखिए ज्यादातर तो वो मुस्कान जैसी है ना, इनको हिजाब और बुर्के पसंद है तो पहनने दीजिए। सिर्फ सेक्युलर स्पेसेस में आप नहीं आ सकते। तो कोई हमें इतना ज्यादा उनको सुधार करने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम इज नॉट रिफॉर्मेबल। वी शुड स्टॉप दिस प्रिटेंस, वी शुड स्टॉप दिस नॉनसेंस ऑफ ट्राइंग टू रिफॉर्म देम। वो हमारे गले काटने आ रहे हैं और हम उनको सुधारना चाहते हैं। वो पत्थरबाज पैदा कर रही हैं लड़कियों को, वो लड़कियां फंसा रही हैं
हिंदू लड़कियों को कन्वर्जन के लिए, हम उनके चिंता में हमारा हर वक्त दिल पसीजता है। लेट्स स्टॉप वरिंग अबाउट देम, लेट्स ओनली वरी अबाउट आवरसेल्व्स। हम बचेंगे कि नहीं, हम बचेंगे कि नहीं। और ये जो मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने की बात है, तो इस्लाम से हटके न्याय मिल सकता है उन्हें, हट जाए। ये तो नहीं हो सकता ना कि जो मजहब अलाउ ही नहीं करता, हम खामखा उसके लिए अपने अपने देश में दंगे करवाएं, कलह करवाएं। व्हाई नॉट लेट देम स्टे इन देयर ghetto, intellectual ghetto, in their whatever, and those who want to come out will do so. उनके लिए घर वापसी का रास्ता खुला होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ वेरी बैड आइडिया, इट विल नेवर वर्क ऑन देम, बट फसाद होगा और जो लव जिहाद और तेजी से बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। आई थिंक विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू वाइंड अप दिस इवनिंग्स, unless you want to comment on it, because I think it's um, your views are Okay, clear. with that words, let us close, Madhuji. Thank you very much for inviting me to the show. No, I'm glad you gave us a new perspective कि इस वक्त क्रिश्चियनिटी इतना बड़ा खतरा नहीं है, ये हमें नहीं मालूम था। हम सोचते थे ये दोनों बराबर के हैं। You've given us a new perspective on this problem and I really appreciate it. और जिस तेजी से इस्लाम बढ़ रहा है, तो आप सही कह रहे हैं कि ऑल इंडिया लॉ, मोदी जी ना भी सही, मोदी जी के बाद भी तो कोई तो आएगा और शायद मोदी जी से ज्यादा कड़क हो, ऐसी उम्मीद करते। Would you not like to see a person more firm in this matter as the Prime Minister of India? I asked you, sir. Mohandas ji. I didn't get you. I said, would you not like to see a Prime Minister of India वो मोदी जी से ज्यादा कड़क हो कन्वर्जन के मामले में? क्या आप नहीं चाहेंगे ऐसा देखना? देखिए, it's these are all two distant figures for me. I have seen Narendra Modi only in television. It will be not fair on my part to say that somebody is stronger than him, he is weak, etc. I think I should not make that comment Okay. in those personal levels. Okay. Therefore, I would refrain from making any comments on what you said. I appreciate that. I appreciate that. But taking a cue from what you said, एक तो ऑल इंडिया एंटी कन्वर्जन लॉ की सख्त जरूरत है, ये आप अग्री करते हैं। दूसरा आपने कहा कि शायद मोदी जी ये नहीं लाएंगे बिकॉज ही इज नॉट कन्विंस्ड। सो इफ दैट इज ट्रू, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे अगले प्रधानमंत्री जो भी बने, जब भी बने, वो इस मामले पे ज्यादा कड़क हो और ज्यादा मजबूत हो और बहुत स्ट्रॉन्ग कड़क एंटी कन्वर्जन लॉ is the need of the hour. I hope whoever follows Pradhan Mantri Modi ji acts in that direction. With these words, viewers, we'll wind up today's discussion. और आपके अगर कोई सुपर चैट में क्वेश्चंस होते तो हम ले लेते, नहीं है तो इसलिए मैंने कमेंट्स आपके मैं पढ़ती तो गई, बट आई कैन नॉट सिलेक्ट देम फॉर आंसरिंग. डू सेंड अस योर रिस्पॉन्सेज on my email editor@manushi-india.org और कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मानुषी चैनल को. और प्रदीप जी, मैं हिजाब नहीं पहन रही हूँ, असल में मुझे बुखार है थोड़ा और मुझे ठंड लग रही है, इसलिए एक शॉल पहन रखी है सिर को कवर करने के लिए. तबीयत ठीक नहीं है, आज थोड़ी कम एनर्जी थी और हल्का सा बुखार भी है, तो हिजाब विजाब तो छोड़ दीजिए. मैं उस दिशा में जाने की कोई मेरी संभावना नहीं है. चाहे कोई यहाँ पे बंदूक भी लगा दे और कहे डेथ और इस्लाम, मैं कहूंगी डेथ मंजूर है.
इस्लाम मंजूर नहीं है, हिजाब बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आई वाइंड अप दिस इवनिंग्स प्रोग्राम। जय हिंद, शुभ रात्रि, जय जय हिंद, भारत, वंदे मातरम। नमस्ते। Namaste. Thank you very much for your inputs. You've really opened my mind to many new facts which don't reach us, Mohandas ji. I'm really appreciative. On most things we agreed, on one or two things we didn't. तो फिर भी बेसिक्स तो हम समझते ही हैं, एक दूसरे के साथ ही हैं, वी आर ऑन द सेम पेज। श्योर, जी, नमस्ते और शुभ रात्रि। नमस्ते।